Kinds of sentences. A sentence is a group of words arranged in a specific order which makes a complete sense. Words are generally arranged in 4 different ways that make 4 different kinds of sentences. Kinds of sentences: statements, interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences. Hello my dear students, welcome back to my online class. This is your English teacher Shivani ma'am. Students, today I am making this video for both the classes 7th and 8th, and today I will be re-explaining you the very first chapter of your language book, the sentence. But before starting today's topic, let me just remind you a few things, that your PT exam is approaching. It might get started from 10th of August. Second thing, it is compulsory for all the students to write their name, roll number and class in the comment section for your attendance. Third thing, you need to write down every single thing in your fair copy. Do not go for any rough copy or just rough notes. Make everything in the rough fair copy. You can make your own notes also. It's not compulsory that you just copy down whatever I have given you here. You can make your own notes. That will also be fine. Okay, so let's start today's video. What is a sentence? A set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, question, exclamation or command, and consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clauses. So, the very easy definition that we all know is a group of words which make a complete meaning is known as sentence. But there are many things which is compulsory in sentence. First thing, that a set of words means a group of words which makes a complete sense. ऐसा नहीं कि कोई भी 2-4 वर्ड्स को आपने साथ में लिख दिया और वो क्या हो गया आपका सेंटेंस. अगर आप कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रख रहे हो तो वो जब रखते हो, आप उसको स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो उसका, तो उसका एक कुछ कंप्लीट मीनिंग निकल के आना चाहिए. सेकेंड थिंग, there is compulsion that there should be subject and predicate both in a sentence. Third thing, a sentence can be of any sort of question. It can be exclamation, it can be command, it can be request, anything. Okay, there should be one main clause or and one subordinate clause. ऐसा भी हो सकता है कि एक main clause और एक subordinate clause हो. ऐसा भी हो सकता है कि एक मेन क्लॉज हो और एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो. ठीक है. सो हमारे सेंटेंस में क्या होना चाहिए? सेट ऑफ वर्ड्स दैट शुड बी मेकिंग कंप्लीट मीनिंग इन इटसेल्फ. सेकेंड, देयर शुड बी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एंड थर्ड थिंग, देयर शुड बी मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. एग्जाम्पल, राहुल इज़ अ गुड बॉय, प्लीज़ गिव मी योर बुक. नाउ वी विल डिस्कस लेटर कि ये किस टाइप का सेंटेंस है. अभी सिर्फ हम इसे समझते हैं कि ये एक सेंटेंस का एग्जाम्पल है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कम टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. In writing and speaking, there are 4 basic types of sentence that we use for different purposes. यहाँ पे हमें पता चलता है कि 4 different kind of sentence होते हैं जिसे हम different purpose के लिए यूज़ करते हैं. First one is declarative sentence, next is interrogative sentence, third is imperative sentence, and next is exclamatory sentence. These different kinds of sentences in English allow us to express ourselves clearly. ठीक है. तो यहाँ पर हम चाहें तो एक ही सेंटेंस होता, हमारा काम चल जाता. ये 4 डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस क्यों हैं? क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हमारे जो बात करने का वे होता है, जो मूड होता है, जो भी उसका पर्पस होता है, वो हमेशा डिफरेंट होता है. कभी हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कभी हम किसी से रिक्वेस्ट करके कोई बात कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम किसी से नॉर्मली बात करते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम किसी से कोई इंक्वायरी करते हैं कि टाइम क्या है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो. तो हमारा जो बात करने का वे होता है और जो पर्पस होता है वो हमेशा अलग अलग होता है. सामने वाले को ईजीली समझ में आ जाए, इसलिए उस सेंटेंस को हमने कैटेगराइज कर दिया है डिफरेंट कैटेगरी में. Okay, using a variety of sentences in your writing will add interest and help you to get your ideas across effectively. To communicate clearly, it's important to know the function of each type of sentences so you can make the right choice depending on your purpose.
ओके तो हमारा जो बात करने का टोन होता है, जो बात करने का पर्पस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज़ आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, आपको किसी से कहना है कि प्लीज़ गिव मी योर बुक, और आप उसको रिक्वेस्ट करके ना बोलो, जस्ट अपोजिट कमांड करके बोलो दैट गिव मी योर बुक, तो क्या उस इंसान को अच्छा लगेगा? नहीं. और आपका जो बात करने का तरीका है और जो सामने वाले को जो समझने का तरीका है, दोनों क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा. सो लेट्स डिस्कस वेरी फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. A declarative sentence is the most basic type of sentence. Its purpose is to relay information and it is punctuated with a period. For example, the boy walked home. I love honey. He wants to eat cookies but he doesn't know how to make them. Now, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ किसी एक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं या सिर्फ हम एक कोई स्टेटमेंट पास करते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ कुछ डिक्लेयर करते हैं, कोई रिक्वेस्ट नहीं करते, कोई ऑर्डर नहीं करते, कोई क्वेश्चन नहीं करते, हमारी कोई सडन इमोशंस नहीं जागते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज़ द मोस्टली यूज्ड टाइप ऑफ सेंटेंस. दिन भर में हम 1000 से ज़्यादा सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें से 90% हम क्या यूज़ करते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, हम सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं, लाइक आई एम अ टीचर, वी आर स्टूडेंट, वी आर टीचिंग, वी आर लर्निंग. Okay, anything in the word, you can say anything and you will realize that most of the sentence that you use in your daily life is declarative sentence. Declarative sentence always ends with a full stop. As you can see, these sentences make statements whether of fact or opinion. चाहे वो आपके फैक्ट की बात आप कर रहे हो, चाहे आप कोई अपनी ओपिनियन बता रहे हो, लेकिन आप बात सिर्फ क्या कर रहे हो? स्टेटमेंट दे रहे हो और कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी सिंपल एज इन द फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स और कंपाउंड एज इन द फाइनल एग्जाम्पल. Okay, now see here. The very first example is, what happened? Okay, the boy walked home. There is only one clause. Okay, there is only one clause. And the second one, I love honey. Again, there is only one clause. And in the third sentence, he wants to eat cookies. Main clause. But he doesn't know how to make them. सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि सबऑर्डिनेट भी होना चाहिए, मेन भी होना चाहिए. आपका मेन क्लॉज भी हो सकता है, उसमें सिर्फ मेन क्लॉज भी हो सकता है, एक मेन क्लॉज और 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकते हैं. They can also be in any tense as long as they do their basic job of presenting information. This makes them the most common sentence type. See here, again it is written here that it is the most common sentence type. It is generally used, yes, it is generally used in normal daily life. Okay, so आपका जो declarative sentence है उसकी पहली चीज़ क्या है? It can be in any tense. ये किसी भी tense में हो सकता है. दूसरी चीज़, it only gives the information. It only makes the statements. Next one is that it can have only one main clause or it can also have one main clause or one subordinate clause. Everything is fine in declarative sentence. And declarative sentence always ends with full stop. Next is interrogative sentences. Interrogative sentences interrogate. Interrogate means, I'll tell you, or ask questions. These are direct questions and they are punctuated with a question mark. For example, why does the sun shine? Whose dog is that? Will Sherry get to keep all her lottery winnings? Okay, now interrogative sentences are those sentences in which you ask question. The most simple definition that I know, by far, कि इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं या कोई इंक्वायरी करते हैं. मुझे आपसे पूछना है कि टाइम क्या हो रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी? क्या टाइम हो रहा है? ओके, व्हाट इज़ द टाइम? तो ये क्या हो गया? एंड किससे होगा? क्वेश्चन मार्क से. ठीक है, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर दोज सेंटेंसेज इन विच यू आस्क एनी क्वेश्चन. They are direct questions and they always ends with a question mark. Examples are written here, you can see it. Many interrogative sentences start with question words like how or why, but others are yes no type questions that begin with the verb instead of the noun. It is important to remember that interrogative sentences still require a noun and a verb to be complete.
ओके, नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, येस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और दूसरा क्या होता है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जो भी WH से स्टार्ट होता है, जैसे हु, हुज, whom, which, why, दे ऑल आर WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और अगर मान लो मैंने पूछा आर यू अ गर्ल, आर यू गोइंग देयर, डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू लाइक टी, ठीक है। WH जो होता है, WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, जहाँ पर हमें इलेबोरेटेड आंसर चाहिए। अगर मान लो मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज़ द टाइम, क्या तुम येस और नो कहोगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। यू नीड टू गिव मी द प्रॉपर आंसर दैट दिस इज द टाइम, ओके। और सपोज इफ आई आस्क यू वेयर डू यू लिव, what would you say? Would you say yes or no? No. You would give me the proper answer that I live there. Okay? तो जिसमें हमको elaborated आंसर मिलता है वो हमारा क्या होता है, WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और दूसरी तरफ क्या है हमारा, येस और नो टाइप क्वेश्चन। येस और नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें हमारा आंसर येस और नो में मिले तो हमारा काम चल जाए। जैसे डू यू लाइक टी, येस आई लाइक टी। ओके, आर यू अ गर्ल, येस आई एम अ गर्ल, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें वी इंक्वायर अबाउट समथिंग और वी आस्क एनी क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, ओके। दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज WH एंड सेकेंड वन इज yes or no. Move forward. This is the third one, exclamatory sentences. Exclamatory sentences are like declarative sentence in that they make a statement instead of asking a question. Now, interrogative में क्या था? We ask any question. But in exclamatory sentences, we do not make any questions. Okay, we just make a statement. But their main purpose is to express a strong emotion. They are easily recognized because they end in an exclamation point instead of a period. Okay, now exclamatory sentences are also like declarative sentence. They also make just a statement. But the difference is that in declarative sentence we don't express a sudden feeling or a sudden emotion. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, हम कोई एक सडन इमोशन या एक सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि जॉय, हैप्पीनेस, एंगर, ओके, ग्रीफ, सॉरो, ओके, एंड दे ऑल्सो एंड्स विद अ एक्सक्लेमेटरी मार्क. Example, I said, there should be a comma. I said I wanted tacos instead of pizza. How well he sings! Wow, he just won a gold medal. Notice that each one of these examples contain both a subject and a verb, which is still a requirement for a complete sentence. So it doesn't matter which kind of sentence you have. This is a compulsion for a sentence to have one subject and a verb. Exclamatory sentences are often used in casual conversation and in written dialogues to show emotion, but they are not typically useful in academic. Okay, now जो हमारा exclamatory sentence होता है ये generally यूज़ किया जाता है writing way में to show the expressions, okay, and it is not generally used in academics. In these more serious works, it's better to make your point with well-written declarative sentences instead. So in general terms, we use declarative sentence more than we use exclamatory sentence. Next is imperative sentences. Imperative sentences do not simply state a fact but rather tell someone to do something. ठीक है, imperative sentence में declarative sentence की तरह कोई statement नहीं देते हैं. ये सिंपली कोई स्टेटमेंट के लिए नहीं होता, ना ही ये किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए होता है. इम्परेटिव सेंटेंस तब होता है जब हम किसी से कोई चीज़ कहना चाहते हैं या हम किसी से कोई हेल्प मांगना चाहते हैं. ठीक है, दीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंडली एडवाइस, बेसिक इंस्ट्रक्शन और मोर फोर्सफुल कमांड. ओके, फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ शट द डोर टू कीप आउट द बग्स. जब आपको किसी को कोई कमांड देना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, ऑर्डर देना होता है, तब आप क्या, या एडवाइस देना होता है, सजेशन देना होता है, तब आप क्या यूज़ करते हो, इम्परेटिव सेंटेंसेस.
Example, turn left at the bridge. Stop bothering me. Okay? Stop bothering me. So these are the examples of imperative sentence. In imperative sentence, what is the main thing to keep in mind? That they are, they always express request or command or advice, suggestion. Many imperative sentences end in periods, but some of the more forceful demands may end in an exclamation point to highlight the emotion. You can identify an imperative sentence because it appears to be missing a subject. Okay, there will be missing of a subject. However, the command of each imperative is directed at you, making these sentences second person. The subject of the sentence may be omitted. ठीक है, अगर वहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिखा है, जैसे स्टॉप बॉदरिंग मी, तो मतलब कि किसके लिए है? यू. जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो ओमिटेड होगा, नहीं लिखा होगा, मिसिंग होगा, तो इसका मतलब कि ये किसके लिए यूज़ किया गया है? फॉर द सेकेंड पर्सन. एंड सेकेंड पर्सन इज व्हाट इज द सेकेंड पर्सन? यू. The subject of the sentence may be omitted, but its goal you understood, because the reader is aware that each sentence could be written as you do this, you do that. To see more okay, just edit this line. Okay, now I hope it is clear to you. Let's revise it once again and then I'll give you a quick quiz. Okay, sentence. What is a sentence? A group of words which make a complete सेंस इज नोन एज सेंटेंस. क्या क्या चीज़ें हमारे सेंटेंस के लिए ज़रूरी है? देयर शुड बी अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, देयर शुड बी वन मेन क्लॉज एंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड इट कैन बी मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके, सेंटेंस किस किस टाइप के हो सकते हैं? डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. सबसे पहले क्या होता है? डिक्लेरेटिव. एंड व्हाट इज डिक्लेरेटिव? इन विच यू जस्ट मेक अ स्टेटमेंट. डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप. Next is interrogative. In interrogative, you inquire about something or you ask any question. Interrogative sentences always ends with a question mark. Next is exclamatory. Exclamatory sentence in which you express a sudden feeling or any emotions like sorrow, happiness, joy, grief, wonder, surprise. Okay, and they always end with a exclamatory mark. Next is imperative. In imperative sentence, you just request somebody or you give command or you force somebody to do something, and they always end with a full stop. Okay, here's the mini quiz for you. Let's do it together. Which sentence type is most common? So it was the first line that I told you in the declarative sentence that the most used sentence is the declarative sentence. So it's the declarative sentence. Next, who came to the party? Which sentence type is used? अब आपको बताना है कि who came to the party ये कैसा sentence है. Optional, options, interrogative, imperative and exclamative. It's interrogative. क्यों? क्योंकि ये question mark से ख़त्म हो रहा है. और ये किस टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? इट्स द WH टाइप. चलो नेक्स्ट. विच सेंटेंस टाइप डज नॉट यूजुअली यूज अ सब्जेक्ट? अभी हमने पढ़ा था कि इम्परेटिव में अगर सब्जेक्ट नहीं भी हो तो भी काम चल जाता है, क्योंकि तब हम सब्जेक्ट किसे मान लेते हैं? टू द सेकेंड पर्सन. तो इसका आंसर क्या होगा? इम्परेटिव. नेक्स्ट इज the declarative form is typically used to issue commands. command किस में देते हैं? imperative में. ask questions, question किस में पूछते हैं? interrogative में. make statements, ये सही लगता है ना? declarative क्यों यूज़ करते हैं? statements बनाने के लिए. question number 5. statements usually end with. statements कैसे ख़त्म होते हैं? question mark ख़त्म होता है. क्वेश्चन मार्क से ख़त्म होता है क्वेश्चंस, फुल स्टॉप और पीरियड. ओके, स्टेटमेंट्स यूजुअली एंड विद अ फुल स्टॉप. यू डोंट लाइक हर, द फॉर्म इज किस टाइप का क्वेश्चन सेंटेंस है ये? यू डोंट लाइक हर इज एक्सक्लेमेटिव. क्वेश्चन नंबर 7. द इंट्रोगेटिव फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड टू
इंट्रोगेटिव फॉर्म किसके लिए यूज़ होता है? रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, गिव इंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेस सरप्राइज. इट इज़ यूज टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी इन एनी टेंस. कोई स्पेसिफिक टेंस नहीं होता इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए. इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस में आ सकता है. नेक्स्ट इज अ सेंटेंस दैट्स यूज्ड टू गिव समवन एन ऑर्डर और कमांड इज एन इम्परेटिव. ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव यूज़ होता है क्वेश्चन के लिए, एक्सक्लेमेटिव यूज़ होता है सडन इमोशंस और फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए. इम्परेटिव क्यों यूज़ होता है? टू रिक्वेस्ट और टू गिव कमांड. नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज टू आस्क. No, ask is for interrogative. Surprise is for exclamatory. Tell something. ठीक है, tell someone to something. What does an exclamative sentence usually end with? Full stop, a period, question mark, an exclamation mark. Obviously, an exclamation mark. Next, sit down and be quiet. What type of sentence is this? This is imperative. Why? Because here we are giving an order. Okay. Next is, which of these sentence types often begin with the subject? Usually declarative sentence starts with the subject. क्योंकि exclamative sentence कैसे start होता है जनरली? wow और what से. और imperative use होता है किसी एक expression of request और order से. ठीक है, देयर इन इम्परेटिव सेंटेंस जनरली जो सब्जेक्ट होता है वो ओमिटेड होता है. नेक्स्ट, विच इज़ एन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस? ही इज सो क्यूट. isn't he cute? How cute he is. This is how cute he is. So students, this was it about today. Okay, I think we have completed the topic really well. But if you still feel any difficulty, any sort of question, you can ask me in the comment section. In the next video, we will meet up again with another topic. Till then, take care, stay safe.